Hello dear students and welcome you in this video. So today now we are starting exercise 4.3 question number 5. So let us quickly start your question number 5. What is question number 5? In a class test the sum of Shefali's marks in maths and English was is 30. जैसे आपका कोई टेस्ट हुआ उसमें आपको maths प्लस इंग्लिश के मार्क्स ऐड करोगे तो कितना है 30 मार्क्स. ठीक है, तो ऐसे ही शेफाली के द सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. ओके, तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स इज इक्वल्स टू x. देयरफॉर हर मार्क्स in English, what her marks in English will become? Can you tell me? See, maths x होंगे तो English क्या हो जाएंगे 30 minus x. Okay, so 30 में से x को minus कर दो. Therefore, her marks in English will be 30 minus x. This is clear to you? Okay. Now, what is given to you? Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर उसके maths में 2 marks ज़्यादा आए होते और English में 3 marks कम आए होते, तो then the product of their marks would have become 210. तो उसके जो प्रोडक्ट होता तब उसके जो प्रोडक्ट होता मार्क्स का इंग्लिश और मैथ्स का 210 होता. ओके, तो आई एम राइटिंग हैड शी गॉट मार्क्स इन मैथ्स. अभी कितने x और 2 मार्क्स क्या है इसके ज्यादा है, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो इतने मार्क्स हुए होते. एंड her and she got, we can write, and she got marks in English. कितने मार्क्स इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, तो इतने मार्क्स थे 30 माइनस x थे, इसमें से 3 मार्क्स लेस होते 30. सॉल्व इट, इट इज 27 माइनस x. ओके, सो वी विल गेट इट इज 26 माइनस x. So now what will this the product of their marks. So therefore, according to question, product of their marks means x plus 2 into 27 minus x would have become 210. Find her marks in 2 subjects. तो ये इसका product होता. So now we have to form the quadratic equation from this. Solve it now. X into 27 is 27x plus minus x square plus 27 to the 40 54 प्लस माइनस 2x. 210 को इधर ले आओ साथ में. ओके, लेटर ऑन 210. सो नाउ व्हाट विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर. लेट मी राइट इन स्टार्टिंग x and this plus minus this is 25x, then this is constant term plus 54. Let me bring minus 210 this side, so equals to 0. Now let us solve this one. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का. 10 माइनस 4 6 0, 10 माइनस 5 5, दिस इज 1 इक्वल्स टू 0. सो नाउ let me make this quadratic equation little bit easy. How? Because here is minus x square, let me make it positive. How? Whole equation will multiply by minus sign, so all the sign will get reversed. Okay, so this will become plus x square, this will become minus x square, this will become plus 156. Okay, so is equals to 0. So now let me solve it using the quadratic formula. Okay, we will use quadratic formula. Therefore the value of x, that means marks of maths, will be minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. We will use this formula. So let us solve here. Let us solve what our value will come. Our quadratic equation is this one. Okay. So x equals to minus b. b is minus 25. Write in bracket minus plus minus root of b square. b square means minus 25 का square minus 4 into a. a is 1, c is 156 and plus 156. Okay, so अब divided by 2a. 2 into what is a 1, तो ये हो गया
So therefore x is equals to plus 25 plus minus root of 625 minus 4 6 are 24, carry over 2, 5 are 20, 22 का 2, carry over 2, 4 5 6 624 divided by 2. So therefore x is equals to 25 plus minus root of 1 divided by 2, which shows 25 plus minus 1 upon 2. So therefore we will get value of x will be 2. One for positive, one for negative. Okay. So what is there? 25 plus 1 upon 2 and second value भी होगी 25 minus 1 upon 2. So what will get? 26 upon 2 means 13 and 25 minus 1 24 upon 2 means 12. तो इसका मतलब क्या हुआ? Value of x is 13, 12. That means what is x? We consider the x is the marks of the maths. Okay. तो इसका मतलब मैथ्स के मार्क्स 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, दो वैल्यू पॉसिबल है. तो अकॉर्डिंगली हमारे इंग्लिश के मार्क्स चेंज होंगे. ठीक है. सो इफ मार्क्स ऑफ मैथ्स will be 13, therefore marks of English will be how much is the marks? 30 minus x. तो that means 30 में से x minus कर दो, 13 minus कर दो, how much will get? 7 10 minus this is 2 minus 1 17. Okay. So इसका मतलब अगर मैथ्स में 13 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में कितने होंगे? 17 मार्क्स. ओके. और if marks in maths अगर 12 मार्क्स हो this one, तो therefore marks in English will be 30 minus x 12. So that means 18 marks. तो इसका मतलब we have two possibilities. What are our two possibilities? That if the marks in maths is equals to 13, तो English में 17. If the marks of maths is 12, तो English में 18. तो मतलब दो possibility हो सकती हैं. तो therefore the two solutions are there 13, 17 and or we can write और ये भी हो सकता है possibility 12, 18. Okay. So this is our two solutions. Okay. It is clear? So it should be clear to you. Okay. Practice it. Now what we should do now? Sixth question. So this was the fifth question. Marks of Safari English and Maths जी आप practical use है जो आपके भी आते हैं क्लास में. Okay. So वैसा ही same it is that. So now we will take question number 6. So what is our question number 6? Question number 6 is, see, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. तो rectangular field का है तो let us draw the rectangular field. Diagonal कह रहे हैं तो diagonal also will draw. So what is the first sentence? They are saying the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. Let the shorter side is x. तो diagonal कितना हो जाएगा? 60 meter more हो जाएगा. ठीक है. If the longer side is 30 meter more than its shorter side, find the sides of the field. और जो longer side है वो shorter side से 30 meter more है. ठीक है. So this is 30 meter more. Meters. So it will hold in meter. This will be meter. This will be meter. Okay. So this is given to you. He diagonal x plus 60, longer side 30 meter more than the shorter side, and this. So very first you will write in a statement form. Let the length of the shorter side is x. Therefore length of the longer side is s. तो हमें sides के sides निकालनी है. That means length और breadth निकालनी है. Diagonal नहीं निकालना है. Sides निकालनी है. Okay. So what we'll do? ये देखो rectangle दिखा है, right angle triangle दिख रहा है. Using Pythagoras theorem. Okay. Using Pythagoras theorem. तो hypotenuse square x plus 60 square is equals to base square x plus 30 square is plus perpendicular square. Open it. A square plus b square plus 2ab. A square plus b square. इसका square करो 3600 plus 2ab.
2 into 60, 120x equals to a square plus b square plus 2ab, 60x plus x square. ओके, यहाँ से तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब ये जो दो हैं दोनों को हम सेंड, वी विल सेट दिस साइड. ओके, सो व्हाट विल फर्स्ट आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर दिस वन प्लस 60x प्लस 900. अब यहाँ की टर्म उधर भेजो, माइनस 120x minus 3600. What will left this side? Nothing, 0. So equals to 0. Okay. So now let us solve this one. So we'll get x square. These two are x term, plus minus minus. So 60x plus minus minus. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 6 minus 9. So that means 16 minus 9, 7, and 2 is left, 2600. Okay. So now we will solve it. I am solving it using a quadratic formula only. Okay. It becomes a little easy. Minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. You can solve it by splitting method also, as you feel easy method. Okay. Therefore x is equals to minus b. अब b कितना है? minus 60. माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो माइनस को नहीं करोगे, तो b की जगह जो होगा वो रखोगे. ठीक है. प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर. b क्या है? माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू c माइनस 2700 होल डिवाइडेड बाय 2a2. व्हाट इज a1? ओके. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 6 3600 माइनस माइनस प्लस 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 28 का 8, carry over 2, 4 to 8, 9, 10. Okay, divided by 2. Now solve it. X is equals to 60 plus minus root of, add करो दोनों को, 0, 0, 8, 9, 11, 14 का 4, carry over 1, 3 and 1, 4, 1, divided by 2. Okay, so let me solve it. So we will solve it here. Let us solve. So what we got? One time we will take positive, one time we will take negative. So x is equals to 60 plus minus. अब ये रूट है. 144 का रूट तो होता है 12. 00 100 का रूट होता है 10. तो 12 into 10 120 आ गया. ठीक है. Whole divided by 2. Okay. So like this we'll find. So now x is equals to, one time you will take positive, one time you will take negative. So 60 plus 120 divided by 2 and 60 minus 120 divided by 2. So therefore x is equals to, ये हो गया 180 divided by 2, 90, and ये हो गया minus 60 divided by 2, minus 30. अब now this is the value of x. x means ये breadth. तो 90 भी हो सकती है, minus 30 भी हो सकती है, but the breadth cannot be negative. मतलब जो लेंथ होती है, कभी भी लंबाई, कभी भी डिस्टेंस नापते हो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ओके. सो बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं. सो देयरफॉर वी विल हैव लेंथ इज इक्वल्स टू x प्लस 30. तो हम यहाँ पर ब्रेथ कितना ले लेंगे? 90. सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 90 plus 30. That means length is equals to 120. So therefore we will have our length is equals to 120 meter and breadth is equals to 90 meter. Okay, so that means our 5th and 6th question we have done in this video. Now in 7th and 8th question we will do in the next video. Till then, take care. Do like my video and share my video. Thank you very much. Okay, bye bye.